Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. ये हम लोग की ऑसम टीम जो यहाँ पर आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, तो उतनी ही कोशिश आपको भी करनी है और वो ये करना है कि इस चैनल को बहुत सारे लोगों के साथ फुलफिल होना चाहिए और वो आप लोगों की हेल्प के बिना नहीं पॉसिबल है, राइट। हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, बट आप लोगों को भी ये चीज़ करनी है। सी दीज आर द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग। 6 to 8 में जितना भी NCERT होता है हम लोग वो कवर करेंगे, एज वेल एज ओलंपियाड लेवल कवर कर रहे होंगे। हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो ओलंपियाड लेवल में आते हैं, राइट, जो ओलंपियाड्स में आते हैं। देन 6 to 10 का जितना स्कूल लेवल एग्जामिनेशन होता है वो सब इस प्लेटफॉर्म पे कवर हो रहा होगा। NTSC, NSC, JES, PRMO, ये सब कुछ कवर हो रहा होगा यहाँ पर, राइट। एंड ऑन यूट्यूब विच इज़ फॉर फ्री, यू नो दैट, राइट। सो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। एंड लाइक आई ऑलवेज से दैट, एंड यस, कोई हर एक बच्चे को ये उसकी राइट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई पा सके, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे के पास कोटा आने का प्रिविलेज हो, और अभी तो वैसे भी नहीं आ सकते। और इसके अलावा भी ये है कि ज़रूरत नहीं भी है, अभी आपको घर बैठ कर के ही वही क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, राइट, एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। मतलब ये तो वीडियो लेक्चर्स हैं जो तो फ्री है ही सही, बट इसके अलावा जो प्लान्स और पैकेजेस हैं वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर है। सी दिस complete like package which is for 9,000 only, and it will be reduced more up to 6,300 when if you will use my code AVLIVE. If you use my code AVLIVE then there will be a 30% discount on it. 30% का डिस्काउंट हो जाएगा एंड ओवरऑल प्राइस वुड बी ऑफ 6,300। मतलब जो ओवरऑल प्राइस होगी इस पूरे पैकेज की, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, देन उस टेस्ट सीरीज का लाइक ऑल इंडिया लेवल पे उसका रिजल्ट, ये सब कुछ आपको सिर्फ 6,300 में मिल रहा होगा। बट ये कहाँ मिलेगा आपको? ऑन अ वेबसाइट www.talkingtextbooks.in के ऊपर, right? Go there, search for the packages, and let's say if you have the study material, you do not need it, you just want the test series, आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका नॉलेज किस लेवल पर है, आप बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उन बच्चों के बीच में, राइट। तो वो भी दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, राइट। जस्ट द टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। सो काइंडली गो टू दिस वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। दीज आर द पेमेंट ऑप्शंस जिसके थ्रू आप पे कर सकते हैं, एंड यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर टीम कितने टाइम में, किस मोड में, किस तरह से आपको आपका पैकेज मिलने वाला है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर which is 9549041111. You can still call on that number and get all your queries answered, right children? So this was about the packages. Let's talk about the DPPs which you can get on our Telegram channel. तो ये हम लोग के Telegram channels हैं। आप रिस्पेक्टिव क्लास में, लेट्स से इफ यू आर इन 7th क्लास 7 तो TTB07 you can search for it. You will be directed to our channel. Join us there, and जो भी करंट वीडियोस चल रहे होंगे उसके DPPs आपको वहाँ पर मिलते जाएंगे, right children? So further moving on, take the promise, and then we'll be doing with few questions which have like which can come in examinations, in Olympiad examinations, या उस तरह के questions आए हुए हैं या आ सकते हैं, right? Basically Olympiad level के questions हम लोग attempt कर रहे होंगे अभी आज के lecture में। So take the promise and then we'll start with it. So basically what is it all about? आज का जो लेक्चर है, मैंने एक्चुअली फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स जो चैप्टर है, चैप्टर 2 फॉर क्लास 7, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, right? I took all the lectures of that. Now we'll be doing questions. We'll be doing questions related to that. So let's start doing. So which of the following is true with respect to this? Respect to 9 by 16 and 13 by 5. I hope this is clear, visible, right? So what should be the case in this? See, here what is happening, we can clearly see it. This is 9 by 16 which is a proper fraction, and here 13 by 5 is a proper fraction.
राइट। तो बहुत ही ईजी है कि 9/16 लाइक इट्स वैल्यू वुड ऑलवेज रेंज बिटवीन 0 to 1, वेरएज यहाँ पे तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, तो डेफिनेटली 13/5 इज ग्रेटर. So C option would be the correct answer here. C option would be the correct answer here, right? Moving forward, which of the following is the improper fraction form of 12 1/5? Right? We know that जो mixed fraction है वो improper में change हो जाता है. So what is it going to be? 60 1/5. 12 5 is 60 plus 1, 60 1/5. So B option correct हो गया यहाँ पर. B option is the correct answer here. What is the sum of 3/4, 7/6 and 1 3/5? Let's do it. क्या हो जाएगा? 3/4 डेफिनेटली मुझको इनका क्या करना है, LCM ही निकालना है. So 3/4, 7/6 plus 5, 8/5. तो इनका LCM कितना हो गया? 60. LCM of 4, 6 and 5 is 60. So this is going to be 4, 1 and 2, 12. No, 15. 45. This is going to be 45 plus 10. This is going to be 70 plus 12 5s are 60. So 12 is 96. Yes. So let's add it now. This becomes what? This becomes 11 and 1, 10, 10 and 11, 21 upon 60. So how much does this become? 9 and 10, 17. Yes. So how much does this become? 60. We are supposed to convert it into mixed fraction form. We are supposed to convert it into mixed fraction form. So how much will this become? It will go 3 times. 18, 180, 180 and 220, 20 and 11, 31. So 31. 331/60, which is B option. Correct. This is B option here. B option is the correct answer here. Let's move forward. Which is, what is the difference of 13/15 and 11/35? Oh, simple. Let's do the solution. 13/15 minus 11/35. So what is it going to be? 5 3s are 15 and 5 7s are 35. 21 and 5. 21 and 5 is 5 and 10. 105. So 15 7s are 105. 21. 91 minus this is going to be 15. How much this is going to be? 35, 15. 7 5 is 35 and 3, 15. Yes, 3, 33. So this is going to be 11 minus 3 is again 8, and 8 and 3 is going to be 5. 58 upon 105. Yes. So my correct answer here is A. Option A मेरा यहाँ पर सही हो गया है. Right, children? Please do the next question now. Here. करो इस question को. Which of the following is a proper fraction? Very easy. This is very, very easy, children. See, which of the following is a proper fraction here? What is a proper fraction? Means where numerator is greater than the denominator. So what is it going to be? Numerator is greater than the denominator.
सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. ये ऑप्शन तो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, विच इज दिस बी ऑप्शन, राइट. न्यूमरेटर, व्हाट डिड आई से, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, राइट. प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, राइट. तो न्यूमरेटर स्मॉलर किस में है, सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, तो यही बस सही है और क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सो लेट्स चेंज इट इनटू let's change it into 3 into 1, 3 and 4, 4 by 3 multiplied by 12 and 13, 12, 13 by 4 multiplied by 7 by 8, right. Now let's see, कुछ तो कट होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, कुछ चीज़ें कुछ अब नहीं होती है, राइट. तो इसमें क्या हो जाएगा 21, 91 and this is 24. So 91 upon 24 ऑप्शन में नहीं है क्योंकि उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है हमको. तो ये कितना हो जाएगा 24 and 16, 4 2 that and 9, no 3, 4 3s are, this is going to go 3 times. 3 is 12 and 1, so this is going to be 318 by 24, 318 by 24, so that is 318 or 19, let me just check it. This is going to be 12, 2, 4 3s are 12 and 6 and 7, so this is going to be 11 and 2, 9, 9 9 9, this is going to be 11 minus 2 is 9 and 19, this is going to be 19, right. 319 by 24 should be the answer, 319 by 24, which is C. So according to me C option should be the correct here, right. C option correct होना चाहिए. करो आप लोग भी. नेक्स्ट करें. What does the next question say is, Guru reads 3 by 5 of a book. He finds that there are still 80 pages left to be read. What is the total number of pages in the book? Right. So Guru reads 3 by 5 of a book. Let the total number of pages be x. Solution क्या हो जाएगा मेरा? Let the total number of pages bx. तब उससे क्या हो जाएगा? पेजेस रेड बाय गुरु कितने हैं? पेजेस रेड बाय गुरु कितने हैं? 3 by 5 of x एंड पेजेस नॉट रेड, पेजेस लेफ्ट कितने हो गए? 1 minus 3 by 5x means x minus 3 by 5x is what? 2 by 5x, which is equal to, he finds that there are still 80 pages left to be read, so this is equal to 80, so 2 by 5x is equal to 80, so this becomes how much? X equals to, this is 40, 5 into 40 which is 200, so there are 200 pages which are supposed to be 200 pages are in total there, right. मतलब टोटल पेजेस कितने हो गए? 200 हो गए. क्लियर? देखो एक बार इसको समझ लो. नेक्स्ट करें. What is 1 by 7 of 49 liters? Alright, so this is very easy भाई, very easy. 1 by 7 of means multiplication 49, so this is obviously 7 liters. C option, very simple. Let's move forward. Indian cricket team won 4 more matches than it lost with New Zealand. If it won 3 by 5 of its matches, how many matches did India play? So what is it saying? That Indian cricket team won 4 more matches than it lost. So let us say that it lost X matches. ठीक है?
So number of matches lost is how many? Let's say x. Let number of matches lost equals to x. Then matches won then matches won are equal to x plus 4, right? See, it is saying Indian cricket team won 4 more matches than it lost. So if it lost x, then it won x plus 4. So total matches, total number of matches are how many? X that are lost plus x plus 4 which are won, that is x plus 4. So this is 2x plus 4. These are our total matches. Now what does it say? If it won 3 by 5 of its matches, right? If it won 3 by 5 of its matches, means 3 by 5 of the total matches. So matches won is equals to 3 by 5 of its matches, means 3 by 5 of total matches, and 3 by 5 of total matches are 2x plus 4, which is also equal to what? X plus 4. This we took out, हमने क्या निकाला? जितने मैचेस वन थे वो क्या थे? x plus 4 थे, जो कि किसके बराबर है? 3 by 5 ऑफ टोटल मैचेस के, जो उसने बता रखा है. यानी कि हमने जो निकाला और क्वेश्चन ने जो दे रखा है उसको हम इक्वेट कर देंगे, विच इज x plus 4. नाउ इट्स इजी. कितना हो जाएगा फिर? ये किया, साथ में कर रहे हो. So this would become 6x plus 12, 6x plus 12, 5x plus 20. So this becomes x equals to 8. X equals to 8. So how many matches did India play? It played x matches, means 8 matches, right? That is option number A. Clear? Clear, children? How many matches did India play? Oh, we took out x. These are the matches which it lost. So these are not the matches. It is asking for how many matches did India play. So it played, total matches that it played are 2x plus 4. So I need to calculate that, right? So that would be what? Total matches are 2x plus 4. So that becomes what? 16 plus 4, which is what? 20. So children, 20 is the correct answer, not A. This 8 was the number of matches it lost, but we are supposed to calculate the total number of matches, which is what? 20. Get it? Please do it. छाप लो इसको, छाप लो, समझ लो मतलब. Shall we do next question? What does it say? What is the product of a fractional number and its reciprocal? The solution here is, if I took a fractional number 1 by a or a by b, right? I took a fractional number a by b and it says, and its reciprocal. Reciprocal means multiplicative inverse, means the numerator becomes the denominator, denominator becomes the numerator. What will it be? B upon a, right? So I'll cancel it. B से B cancel, A से A cancel, and I get what? 1. Again, दूसरी तरह से भी कर सकते हैं. If I took 1 upon x, right, and multiplied it with its reciprocal, which is x by 1 or simply x, then also I'll get 1 only. Right, children? Is this clear? I hope it is. Let's move forward. Just understand, children, जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो छूट गया हो जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं बन पाए, राइट? ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं होगा.
जो यहाँ पर और अगर कुछ रह भी गया है, राइट, अगर कोई एक आधा क्वेश्चन रह भी गया है तो वो इन क्वेश्चंस में कवर अप, मतलब कोई कंसेप्ट रह भी गया होगा अगर, तो वो इन क्वेश्चंस में कवर अप हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल जो इससे रिलेटेड जितना आपका ओलंपियाड का लेवल है वो ऑलमोस्ट कवर हो रहा होगा, राइट, इट विल बी ऑलमोस्ट कवर्ड. So let's do this. What should be added to 21/27 to make it 26/27? Oh, this is very simple. देखो बस 5 ही तो ऐड करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है. क्यों? क्योंकि see this is 27 and this is 27, मतलब डिनोमिनेटर सेम है. आपको you don't have to change its denominator. So what should be added? 21/27. Let's say x should be added. अगर मैं ऐसे भी जाऊँ तो this becomes 26/27. So this is what? 26/27 minus 21/27. This is very easy. 5/27. Right? Which is option C. Option C. Clear? See to it. What does it says? What are the fractions with different denominators called? Oh, very simple. Different denominators अगर होंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं? Unlike fractions बोलते हैं, right? तभी हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर्स का सेम हो जाते हैं तो फिर हम उनको क्या बोल देते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोल देते हैं, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. What is the equivalent fraction of 8/11 having the numerator 40? Very simple. See, 8/11. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 40 करना है, मतलब न्यूमरेटर 40 करना है. कभी होएगा? व्हेन आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद 5, so I'll have to multiply the denominator also with 5, so I'll get here 55, which is 40/55, which is option number C. Gotcha. Let's move forward now. What do you call the fraction with which have 1 as the numerator? Interesting. It is called unit fraction. Right children, it is called unit fraction. मतलब इसका कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ. इफ आई से 1/3, ज़्यादा ही zigzag हो गया. 1/3 और 1/9 और 1/2 और 1/761. All these are what? All these are unit fractions which have what? Numerator as 1. Which have numerator as 1. So that are known as what? Those are known as unit fractions. Important thing to remember. Next, in which of the following fractions is the numerator greater than the denominator? Now numerator is greater than the, this is what it is saying, numerator greater than the denominator. Numerator greater than the denominator तो improper में ही होता है क्योंकि तभी तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है 1 से. So 1 या 1 से like either it is equal to 1 or greater than 1. So that is equal to what? Improper fraction. B option. Right? Let's move forward. 1/9 of a number is 5. What is the number? Oh, 1/9 of a number. Let the number be x. Simple. So let the number be x. मैंने उसको ले लिया x. अभी क्या होएगा? वो बोलता है 1/9 ऑफ दैट नंबर. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और फिर मैं उसके अंदर क्या कर देती हूँ? उस x को मल्टीप्लाई. सो इज 5, इट इज सेइंग दैट इट इज इक्वल टू 5. So my x becomes equals to 45 because 9 into 5 is 45. Right? So D option is the correct answer here. Clear children? Shall we move forward? ऐसा मेरा मन कहता है कि हाँ तो हम कर लेंगे क्योंकि मेरी चलेगी यहाँ पर अभी. Given that P by Q equals to S by T, which of these is true? तो अब see to this. See. P by Q is equals to S by T. P by Q is equals to S by T. तो अभी what we can do is we can cross multiply these. So what will I get? PT equals to SQ, which is C option. Simple. मतलब ये जो मुझको दे रखे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, it is said that they are equivalent fraction. तो मैं क्या कर लूँगी? उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, which I apparently did. So C ऑप्शन सही आ गया.
Next, do the next question. What should be added to 3 to get 3 1/5? Let the number be x. आसान है, x मान लो, ठीक है. So what should be added to this? Let it be x. Then what should be added to 3? X should be added to 3 to get what? 3 1/5, which is what? 15. 16/5. This is 16/5. Yes. So this becomes what? X equals to 16/5 minus 3, which is again what? 5. 16 minus 15. तो मुझे एक यूनिट फ्रैक्शन मिल गया 1/5 b, राइट. एक यूनिट फ्रैक्शन मिल गया which is 1/5. So this becomes 15 minus 1/5 is, अच्छा 15 plus 1/5 is definitely 16/5 only. वैसे भी चेक कर सकते हो आप, राइट. Next 19. If 4 7/11 equals to x/11, what is the value of x? Very simple, I am telling you, it is very, very simple. See to this. See, 4 7/11 means 44 and 7, 21. No, not 21. 51. Right? 7 and 4. 51/11 equals to x/11. मैंने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया है. अभी 11 and 11 कैंसिल, so I remain with 51 equals to x. So my correct answer is A. Shall we do next question, children? Yes. So what is the lowest form of this? Now you will do it. Come on, do it. What is the lowest form of 12/30? 12/30 would be what? I'll divide it by common HCF is. Common HCF is 6. So this becomes 2 and 5. So this is 2/5, which is option number C. C option is the correct answer here. Right, children? बेटा समझ में आ रहा है ना? बताओ. चलो next. Next question says, in which of the following does the shaded part represents 1/3 of its whole? मतलब कि क्या बोलता है ये बोलता है कि मुझको बताना है कि 1/3 of whole किधर है. तो अभी इसको देखोगे, this is what, how many parts are there? इधर 4 है, but एक shaded है, means 1/4. No, not our option. Next ये कितना है? 2. 1/2. Again no, this is also 1/2. अभी ये अपना ऑप्शन दिखता है. क्यों? क्योंकि इधर क्या है? 3 पार्ट्स हैं. इधर 3 पार्ट्स है और एक शेडेड है, तो अपने को मिल गया. शेडेड पोर्शन ही पूछता है वो. So 1/3 is represented by option number D. Clear, children? Shall we move forward? Okay. What does this say? Now read it with me. How many parts should be shaded in the figure B to make it represent the same fraction as the unshaded part of the figure A? अभी ध्यान रखने की बात इधर क्या है, वो ये है कि इधर क्या लिखा है? अनशेडेड पार्ट. अपने को शेडेड पार्ट का नहीं फ्रैक्शन निकालने का है. दैट इज 1/3. दैट इज लाइक दिस इज वेयर यू नीड टू पे अटेंशन कि वो अनशेडेड पूछ रहा है, विच इज व्हाट? 3/4. कितना बोलता है वो? 3/4. Now let's count these. How many are these? This is 10 and 2. Means there are total partitions that we have are 20. Right? तो अभी ऐसा क्या करेंगे अपन कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे अपने को 20 मिले और ऊपर मिल जाए 3. So obviously 15/20. 15/20 is 3/4.
15/20। अब इसका कॉमन HCF क्या है 5 विच इज 3/4। 5 से डिवाइड करोगे तो 3/4 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब मुझको कितने यहाँ पर शेड करने होंगे, आई हैव टू शेड हाउ मेनी, सॉरी अनशेडेड वुड बी हाउ मेनी 15 एंड शेडेड कितने हो जाएंगे 5, राइट। तो अनशेडेड पोर्शन कितने रह जाएंगे 15 रह जाएंगे और 5 अपने को शेड करने होंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ये 5 हो गए, बाकी 15 जो है वो बच गए, ऊपर के कर लो या इस तरह से कर लो, इट इज अप टू यू। सो अब मेरे पास अनशेडेड पार्ट जो है, अनशेडेड पार्ट कितना है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 15/20 विच इज 3/4। तो मेरा ये इक्वलेंट आ गया इससे, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया। मतलब कि मुझे 15 पार्ट्स जो हैं उनको अनशेडेड रखना होगा, उनको शेड नहीं करना होगा, अनशेडेड रखना होगा। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? How many parts should be shaded in the figure B? Acha, oh, it should be shaded. Sorry, it is saying to be shaded. So of course, see it is saying मतलब इसमें shaded जो है वो इसका unshaded से equal होना चाहिए. So doesn't matter, हम लोग 15 को वो कर देते हैं and 5 should remain. So all this will get shaded, right? ये सब कुछ shaded हो जाएगा, right? ये सारे shaded हो जाएंगे and that will be equal to इसका जो unshaded part है, मतलब unshaded part of A should be equal to shaded part of B, which is both 3/4. 3/4 and 3/4, right? दोनों में 3/4 आ गया, right? Clear children? आगे बढ़े अब हम. Shall we move to the next question now? Madhvi eats 1 full bar of a chocolate. Oh, chocolate नाम से तो पढ़ के मेरे को भी इच्छा हो गया, मैं खाऊंगी chocolate, खाऊंगी अब मैं. Madhvi eats 1 full bar of a chocolate, then she divides another one into 5 equal parts and eats 3 of them. गजब यार, एक तो पूरी खाई ली, मतलब दूसरे में से भी उसको 5 खानी है, मतलब 5 पार्ट में से 3 खानी है और 2 रहने देनी है. हाँ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट शी हैज ईटन? बहुत सारी, मैं कहना चाहूँगी बहुत सारी. थोड़ा बांटो भी भाई, ऐसा थोड़ा होता है, हमको भी दो. हाँ यार, माधवी ईट्स 1 फुल बार ऑफ चॉकलेट, मतलब वो तो 1 हो ही गया, प्लस देन शी डिवाइड्स द अनदर वन इनटू 5. 5 उसमें से 5 वो उसका वो करती है, यानी कि 5 टोटल पार्ट्स हैं, राइट, एंड ईट्स 3 ऑफ देम, मतलब 3 उसमें से वो खा लेती है. ठीक है, मतलब 5 में से भी 3 उसकी हो गई, 2 ठीक है छोड़ दी उसने. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट शी हैज ईटन? तो बस इसको ऐड कर देना है अपने को, फाइनल आंसर मेरे को मिल जाएगा 8/5. 8/5 चॉकलेट्स उसने खा ली, राइट, विच इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है, राइट. आया समझ में? How many 1/4 need to be added, are needed to be added to 2 1/4 to make 5? Need, इसमें ना इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है. So how many 1/4 are needed to be added? अब needed और added दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, पर हमको prima facie we know what it is asking. So how many 1/4? Let the number of 1/4 be x. Let the 1/4
needed be x, ठीक है. Let the 1/4 needed be x. Then how many of them would be needed? 1/4 x अच्छा, it is to be added. It is to be added to this, मतलब इसमें into 9/4. 9/4 में मुझे कितने ही ऐड करने हैं, राइट? 9/4 में कितने ऐड करने हैं? सो दैट आई गेट 5 here, राइट? सो दैट आई गेट 5 here. तो अभी कितना ऐड करने का है अपने को? वेरी सिंपल. दिस बिकम्स x प्लस 9 इक्वल्स टू 20, है ना? एलसीएम ले लिया मैंने, 4 कॉमन है, सो दिस बिकम्स x प्लस 9/4. अब 4 को मैं उधर ले गई तो दैट बिकम्स व्हाट? 20. 5 4s are 20, so this becomes what? 11. 11 हो गया आंसर मेरा. Oh, has it become 11? 11/4, which is what? 11/4, that becomes 9, 20 and 5. बिल्कुल करेक्ट है. x equals to 11. चेक कर लिया है मैंने. This is correct. क्या चिल्ड्रन? ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम अपन. चलो, लेट्स डू इट. Between which two numbers does 11/4 lie? Very simple. This is an improper fraction. तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली इसको डिवाइड कर लो. So 4 2s are 8, right? So definitely this is going to be between 2 and 3, right? So option number B is the correct here. Correct answer here, right? Let's move to the next question. Look at the alphabets given. प्रसाद, मंदिर में जो अपने को मिलता है प्रसाद. What fraction of alphabets are made of 3 straight lines? Now I am supposed to see कि यहाँ पे ऐसे कितने letters हैं which are made by 3 straight lines. So there are A, it is A and A only, means 2 A's. So this is what is the fraction then? What is the fraction then? It is 2/6, which is what? 1/3. So option A correct हो गया यहाँ पर. Option A correct हो गया. Clear children? Is it clear? Shall we move to the next question now? What fraction of alphabet are made of semicircles and straight lines? What fraction of alphabets are made of semicircles and straight lines? Now see to this. सेमी सर्कल यहाँ पे मुझे P में भी दिख रहा है, R में भी दिख रहा है और D में भी दिख रहा है. एंड यहाँ पे स्ट्रेट लाइन D में भी दिख रही है, R में भी दिख रही है, P में भी दिख रही है. मतलब ऐसे मेरे पास कितने हो गए लेटर्स? आई हैव 3 लेटर्स जिसके अंदर सेमी सर्कल एज वेल एज स्ट्रेट लाइन हो रही है. सो दैट बिकम्स 3/6. 3/6 मेरा क्या हो गया? 3/6 विच इज 1/2. मतलब सोल्यूशन कितना हो गया? 3/6 because it is P, R and D, right? अब इसके अंदर क्या है? 3 है 6 में से, तो 3/6 which becomes 1/2. So A ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर. A ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, right? Let's move forward. Which of the following is an improper fraction? Children, this is not covered. Okay, this is also like blank. So which of the following is an improper fraction? Now let's see to it. See, अगर मैं अनशेडेड की यहाँ पर बात करूँ, अनशेडेड की बात करूँ, तो अनशेडेड कितने हैं? टोटल कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4. टोटल 8 parts are there, right? Total 8 parts are there, and from that if I am talking about unshaded, then 3. So this is proper fraction. If I talk about shaded,
Then also this is 1, 4 and 5, 5 by 8. This is also proper fraction. Let's talk about this. This is unshaded children. Right? तो unshaded में मैं क्या बात करूँगी? 1, 2 and 3 means this is unshaded, not blank. Right? So if I'm talking about unshaded, तो उसमें से 3 by 4 है and shaded is 1 by 4. So all this is what? These two are also again improper fraction. Proper fraction. अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो shaded यहाँ पे कितने हो गए? Shaded यहाँ पे है 5/7, 5/7 और unshaded कितने हैं? 2/7. So all this is what? All these are improper fractions. Proper fractions. Right? All these are proper fractions. Whereas this is 6 by 6. Total 6 है, उसमें से 6 ही क्या है? Shaded है. So this becomes what? 1. So this is what? Improper fraction. This is improper fraction. मैंने बताया था कि improper fraction का जो value होता है वो either it is equal to 1 or greater than 1. Right? This is what I told. So according to that B option correct हो गया यहाँ पर. Right children? देख लो एक बार. Okay, children, this is correct. This is not shaded, right? This is this is shaded only. So जो भी ये correct, जो भी ये position बता रहा है, which is correct, this is correct. So if I talk about unshaded, तो unshaded कितने हैं? 2 हैं. 2 out of 4. So this is what? 1 by 2. And again, if I talk about shaded, that is also 2. So 2 by 4, which is again what? 1 by 2. So in both the cases, again, this is what? This is like proper fraction only, right? तीनों में क्या है? Proper fraction ही है. सिर्फ इस वाले के अंदर क्या हो रहा है कि 6 by 6 है, तो that becomes equal to 1 and which is what? Improper fraction. So B option correct हो गया यहाँ पर. 29. What does the shaded part of the following strip represent? अब shaded part हम लोग को दिख रहा है कौन कौन सा? How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total 7 partitions are there. 7 equal partitions. Fractions यही होता है कि आप किसी भी particular चीज़ को like you're dividing it into equal parts. That is fraction. Equal parts में आप उसे divide कर रहे होते हो. So 7 equal parts are there. Now what is the measurement of like किस तरह से represent हो सकता है ये जो shaded part है? So this is 1 by 7 because this is shaded differently. So 1 by 7. Here I have 1 by 7. Then 2 by 7. So again 2 by 7. This is again 2 by 7. So 2 by 7 which is equal to what? 5 by 7. So D option मेरा correct हो गया यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये एकदम correct उसका representation बता रहा है जिस तरह से ये shaded है. Right? Shall we move forward? Okay, which of the following statement is true? Fraction with the same numerator are called like fractions? No, dude. Fractions with same denominators are called like fractions. Fractions with the same denominator are called unlike? No, they are called like. Difference of two like fractions. Okay, difference of two like fractions is that denominator is same, that is common. So common denominator and difference of the numerators. This is correct. So C option is the correct answer here. I need not look at the D option. Why? Because it is one correct answer, means like only one answer is correct here, not multiple, right? So C option is correct. Even if you want to read, you can go to it. 31. Which figure shows 1 by 10 shaded? Let's count it. It is asking for shaded. राइट तो ये अपने को पढ़ना ज़रूरी होता है कि शेडेड के लिए पूछता है, अनशेडेड के लिए पूछता है. वो शेडेड के लिए पूछ रहा है, तो 1 by 10 शेडेड कौन सा हो गया? अब देखो इसको देखते हैं अपन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Though this also has 10 partitions, but they are not equal, right? These partitions are not equal. That is why this is not a proper fraction, right? Now let's count here. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
and this is definitely 11. So हमारा correct answer कौन सा होगा? 1/10 is this. 1/10 is this. क्योंकि 10 equal partitions है, उसमें से 1 shaded है and it is asking for 1/10 shaded means this is the one. This is the one. This is the option that we were looking for in this question. Let's move forward. What does it says? How is the decimal number 9.6 red? So it is red as 9.6 only. A option. ये तो correct हो गया. ये तो ऐसे ही question पढ़ने में पता लग गया 9.6. So can you see कि मैंने आपको कितना अच्छा पढ़ाया है, जिसकी वजह से you are able, like ये questions आपको कितना easy लग रहे हैं, right? What is the decimal equivalent of this? Now I told you tenths, then hundreds, then thousands. मतलब कि जब भी हम decimal के बाद decimal से हम like after the point decimal we move towards the right side, तो वहाँ पे क्या होता है? Upon 10. Multiply किससे होता है? 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000. I told you in the last to last lecture, right? So this becomes what? देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.4. 4 is on the tens place, then 0 as it is, and 9 is on the thousands place, so 9. 0.409. So this is C option, right? 0.409. Let's move to the next question. What is the place value of 3 in 9.365? So that is 3/10. 3/10, which is option C. Which is option C. 3/10. Correct? Let's move to the next question. How can 800s be written? 800s किस तरह से लिखा जाएगा? See. What does that mean? 800s means, it means 8/100. It means this only. So how can I write it? Fraction को decimal में convert करना. At the place of 1, I'm going to write a decimal. Then since there are 2 zeros, so there has to be 2 decimal places, right? So what will I write? A 0 here because it is just one single digit, and then I'll write 8. So what does this become? 0.08, which is which option? 0.08 is B option, right? This is how you do these questions. Shall we move forward, children? What is the decimal fraction shown by the shaded part of the figure? Come on. Come on, children, do it. What is the decimal fraction shown by the shaded part of the given figure? अब वो पूछ रहा है shaded part. Shaded part क्या है? अपने 1, 2, 3, 4 and 5. Right? It is 5 shaded parts are there. Out of how many? 5 and 10. Right? तो अब इसका decimal representation किस तरह से होगा? It will be 0.5. Definitely, because 1 0, 1 decimal place. Instead of 1, we are going to put the decimal sign. So this is 0.5, which is option number B. Option number B here. Clear, children? Now, all this will be like you can do all these questions. You can try all these questions. इसमें से 3 questions I have made you like do in the class as well. इनमें से 3 question मैंने आपको class के अंदर भी करवाए हैं. Right, so that was all for today, children. Thank you so much for watching. Please give your feedback in the comment section. That is really important for us. And remember to use my code AVLIVE to get 30% discount. And yes, keep liking, keep subscribing, and keep sharing, and keep coming on our platform of YouTube, that is Talking Textbooks. Bye-bye.